Hi, good evening, everyone. I'll just quickly share the link. Setup करने में थोड़ा सा time लग गया, and I'm really sorry that I'm a bit under the weather considering दिल्ली में भी बारिश गर्मी कुछ भी चल रही है. So I'll just quickly share the link of the session so people can join and then we can start. Yeah. Okay. So a couple of things before I start. Uh, देखो दो तीन चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं क्लैट के फॉर्म में इस बार. द फर्स्ट ऑफ देम इज फॉर्म में एनआरआई स्पॉन्सरशिप का कहीं भी डिटेल इज नॉट गिवन दिस टाइम अराउंड. सो देखो दो तीन चीजें हैं जो चेंज हुई हैं. देयर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग और देयर इज अ कंफ्यूजन आई रादर से रिगार्डिंग इस बार एनआरआई स्पॉन्सर है कि नहीं सर. है इस बार एनआरआई स्पॉन्सरशिप. सो आई हैव कॉल्ड दिस कंसोर्टियम एंड वी गॉट टू नो दैट what they have done is removed the NRI sponsorship completely from the form. एंड आपको कॉलेज के वेबसाइट्स पे एनएलयूज की वेबसाइट्स पे जहाँ जहाँ एनआरआई स्पॉन्सरशिप्स ऑफर होती है वहाँ आपको इंडिपेंडेंटली जाकर अप्लाई करना पड़ेगा. तो दैट इज़ वन. सेकेंड इज ऑल्सो अंडरस्टैंड one more thing that another very common doubt which is coming is that whether we have to uh, sign in using our same old account if we are a dropper or we have given CLAT before. The answer is no. न्यू अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा. सो लेट मी टेक यू थ्रू द step by step process of how the form is supposed to be filled. I'll quickly share my screen and I'll show you. So this is the home page, right? अब यहाँ पर what I have done is, just give me a second guys. Yeah, I'll quickly reduce this. I hope the form is visible now. Yeah, so this is the home page. And what you have to do, you have to click on register on here. Don't have an account, register. You have to register anyway. आप अपना नाम डालो, आप अपना मोबाइल नंबर डालो, email ID डालो, create your own password and confirm that password and please remember that password. A lot of people forget their passwords. Reset कर सकते हो, कॉमन सा पासवर्ड रख लो, कहीं लिख के रख लो. यहाँ पर आप रजिस्टर करोगे तो आपका एक OTP आएगा फ़ोन नंबर पे. आप उस OTP को डालोगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू गेट वंस यू जनरेट your OTP when you click on register, right? You your phone number is here. You put your OTP. You click on activate, and this then you put your phone number and you put your password and you just click on login, and this is what you get. Okay, this is what you get. So यहाँ पर आपको दोनों कोर्सेज में से एक चूज करने का ऑप्शन आएगा. Obviously, we'll go by UG. If you want to check your eligibility, there's no change there. Obviously, there's no upper age limit. Candidates who have passed 10 plus 2, they can fill it. People who are appearing for the qualifying exam in 2026 are also eligible to apply. A lot of people who are in 11th also give the paper. So they fill the form as qualifying in 2026, right? Because they don't want to sit for the counseling process, they just want to give it for the sake of practice, right? So they will fill the form as qualifying exam appearing students of 2026 because that's the only option. 2027 का ऑप्शन आएगा नहीं. आप 11th में हो, आपका बोर्ड जो होगा 2027 में होगा, बट वो आएगा नहीं ऑप्शन. तो आप 2026 फिल करके आप पेपर दे सकते हो. इट्स जस्ट दैट you cannot sit for counseling, you cannot go for a college obviously because you will not have a mark sheet by then. So let's go back. This is what you get. UG 5-year LLB program. अप्लाई फॉर क्लैट 2026 करोगे, यहाँ पर आपको वार्निंग मिलेगी कि ओके यू हैव सेलेक्टेड टू अप्लाई यूजी, कंफर्म कीजिए, यू क्लिक ऑन ओके एंड दिस इज द लिस्ट यू गेट. नाउ लेट्स गो थ्रू द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल. फोटो की डिटेल्स ऑब्वियसली जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट. अगर आपके फ़ोन में कुछ और फॉर्मेट से फ़ोटो आ रहा है आप गूगल पे जाओ, ठीक है. लेट्स से
you can literally create PDF to JPG. ठीक है? You Google this, you get a lot of application free of cost and you can just quickly convert it to JPG. JPG में convert करके आप upload कर दो photograph. Please make sure your photo has a light background. ठीक है? Facebook, Instagram से photo उठा के मत डाल देना. Okay? Just be थोड़ा सा meticulous about it. You can literally take a picture from your phone against this background, right? Signature, again, sign it properly and upload your signature as well. Again, the JPEG, PNG format में आप फोटो डालोगे. आप अपना +2 में जो सर्टिफिकेट का नाम है आप वो नाम डालोगे, DOB डालोगे, अपनी ऑल इंडिया कैटेगरी. नाउ प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. When you select any of these all India categories, you have to immediately give a proof. So let's say for example other backward class, all India OBC है ये. State OBC से इसको confuse मत कीजिएगा. This is all India OBC. यहाँ पर आपको फिर select करना है, do you belong to the non-creamy layer category or not? Obviously you cannot say no because creamy layer category में OBC reservation मिलता ही नहीं है. तो अगर आपके पास OBC NCL का सर्टिफिकेट है, आप यहाँ yes क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पर रेलेवेंट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा, कॉपी. ठीक है? फिर सेम गोज फॉर शेड्यूल कास्ट, सेम गोज फॉर शेड्यूल ट्राइब, राइट? यू हैव टू अपलोड द प्रूफ फॉर ऑल इंडिया कैटेगरीज, ऑल इंडिया ST, ऑल इंडिया SC, ऑल इंडिया OBC right now. Okay, done. So then it's asked, are you a PWD candidate? And यहाँ पर obviously if there is yes, if you are a person with disability category student, तो आपको बताना पड़ेगा आपकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज क्या है. अब अगर आप ध्यान से इसको पढ़िएगा यहाँ पर, तो दे हैव सेड कि आपके पास ऑब्वियसली एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी होना चाहिए और आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी शुड बी मोर देन 40%. Then only you can be eligible for reservation. If it's less than 40%, you will not be eligible for the PWD reservation. So you will select yes, not less than 40% disability, and आपकी certificate में kind of disability आती है. Okay, and then you type in the kind of disability and you upload the copy of the relevant certificate. Then some persons who are specially able, they also require a scribe, especially people who have some disability where they're with their limbs or with their eyesight, they will require a scribe. So then you can choose yes, and then you will have an option to either bring your own scribe or the consortium will provide you the scribe, right? There will be an invigilator, so obviously तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ scribe ही ऐसा ले लो कि जो मेरा exam लिख दे. Okay, obviously that's not the truth and you can't do that, right? And then the last option, whether the candidate falls into the below poverty line category. Now a lot of people confuse it with EWS. This is not EWS. Below poverty line is a separate category. If you click yes, आपको अपना BPL certificate भी यहाँ पर upload करना पड़ेगा. So that's in the first page, right? That's on the first page of the form. Then you fill your communication details. First is the correspondence address. Where are you currently residing? So if any letter or any document has to be sent to you, where should be that letter or document should be sent from the consortium side? Correspondent address आप यहाँ fill कीजिएगा. Permanent address is where you permanently belong from, right? And that will be your permanent home address. Now correspondence address and permanent address at a lot of time can be the same thing, so be careful about it and fill it accordingly. Next is the qualifying examination details. Now please listen here carefully. If you are currently in 11th, you will, let's say for example, choose 10 plus 2 or its equivalent. CBSE है तो CBSE type in कर लो, right? You can just quickly type in CBSE. ICSE है तो CISE type कर लो. Appeared for people who are in 11th and 12th right now. 11th or 12th right now, you will select appeared. अगर तुमने 12th का एग्जाम इसी साल दिया था, तुम्हारा एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो तुम पास्ट पे क्लिक करोगे. Month of passing, generally it's April or May. Obviously when the results
are declared, that's the month of passing. तो एंटिसिपेशन में आप देखो यहाँ लिखा हुआ है मई आपको मंथ ऑफ पासिंग पिक करना है. एंटिसिपेशन में प्रीवियस ईयर में अगर आपने 12th दिया है तो जस्ट पुट इट when your results came out. And year of passing, obviously you can select when did you obviously got your 12th ka result and the percentage of marks. If you are in class 11th or 12th, obviously this can remain blank. As you can see, there is no asterisk here, which means it's not compulsory. And then you come to the test city center preference. So test center preference one, it can be anything. Lot of people were looking for Delhi here. It's New Delhi. तो आप end में जाइएगा तो आपको New Delhi मिल जाएगा. You can also find, for example, let's go through NCR options. Gurugram, you will find Faridabad, you can find Noida, Greater Noida, right? You can also find uh, Ghaziabad around here. Yeah, these are the NCR options. Obviously, apart from that, you have a lot of centers. Please preference one अभी अगर आप fill कर रहे हैं तो आपको preference one most likely मिल जाएगा. If you fill it very close to the deadline, you might not get your preference one. So it's advisable to fill it like max to max by early October, right? So that's your 4 pages of details. Now, if I go to reservation, they will send me back here because I've obviously not filled every form. But let me tell you how it works. Let me just quickly fill some random things here. Okay, so we can go there. Let me just do this. Everything is removed. No. EWS यहाँ पूछेगा. अगर आप ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी डालोगे, ऑल इंडिया कैटेगरी जनरल डालोगे तो आपको फिर EWS का भी क्वेश्चन यहाँ पूछेगा. अगर आप यहाँ यस डालोगे, दे विल नॉट आस्क फॉर अ फॉर्म और अ सर्टिफिकेट येट, they will ask it later on. So let's just go for, if someone is an EWS candidate, they will fill all India category general, and then do you qualify under the EWS category mein, they will put yes. Okay, let me just do this quickly. Let me just upload a photograph quickly. Submit. Just to show you guys, I'll quickly do this. Submit. All of this is submitted. Obviously मैं faulty तरीके से कर रहा हूँ, but just ignore that, right? Then yeah, let's go to qualifying exam details. Let's put CBSE here. Let's say it's 2015. Its percentage of marks, let's say 80 something. Okay, no, I can't in my dream score 98%. So like, okay, let me just dream here. And then if I go to reservation, it will send me back even if I have missed something. अगर मैंने कुछ मिस किया है वो मुझे पीछे भेजते रहेगा. ठीक है. So let me just do no here. Anything else I have missed? I don't think I've missed anything. Yeah. Yeah. So now the details are filled. अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल होता है, बहुत ध्यान से सुनना. अभी हमने यहाँ ऑल इंडिया कैटेगरी अपनी डाल दी है. यहाँ पर हम ये 3 कैटेगरीज डाल सकते हैं. चौथा कैटेगरी हम यहाँ EWS डाल सकते हैं, राइट? ये 3 कैटेगरीज की प्रूफ मुझे अभी अपलोड करनी पड़ेगी. PWT की प्रूफ मुझे अभी अपलोड करनी पड़ेगी. बिलो पॉवर्टी लाइन की प्रूफ मुझे अभी अपलोड करनी पड़ेगी फॉर्म फिलिंग के टाइम. बट अगर मैं रिजर्वेशन स्टेट स्पेसिफिक क्लेम कर रहा हूं तो मुझे उसका प्रूफ अभी नहीं अपलोड करना. सो आई विल शो यू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. लेट्स से देयर इज समवन फ्रॉम बेंगलुरु, राइट? देयर इज समवन फ्रॉम कर्नाटका. So what they will do, they will select, are you a Karnataka student? Yes. And then this entire notification will come. This is basically who can claim the Karnataka students category. To read through this. But a better option is just click on this small PDF icon and you will get the NLS ka pura brochure. Go through the brochure and quickly go to the seat matrix and reservation policy. This intake and reservation. देख लो कौन सी सीट्स हैं यहाँ पर. उसके बाद नीचे तुम देख लो किस टाइप की और रिजर्वेशंस हैं. women, person with disabilities, Karnataka students, extra Karnataka students, 10 seats, and then read about what Karnataka students category is. Okay, what kind of certificates you need to attach alongside with it. So हर स्टेट में तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा. So if yes, let's say I click yes again.
and then I get GC Karnataka already. Just by clicking on are you a Karnataka student? Yes, I get the general category Karnataka reservation, right? उसके बाद other eligible reservation category में I can pick whatever is applicable for me. So I'll tell you an example. This is a very important thing. There can be people who are treated as other backward classes in their respective state, but they might not fall into the All India OBC category. अब ऑब्वियसली आपकी कैटेगरी आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे, वो आपको बताएंगे, आप गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस चेक करोगे, ऑल इंडिया नोटिफिकेशंस चेक करोगे, अपने स्टेट स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस चेक करोगे और फाइंड आउट करोगे कि आपको किसी भी कैटेगरी की एलिजिबिलिटी मिल रही है कि नहीं. अगर मिल रही है, इट इज़ अ बेटर आइडिया, इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया to go for first getting the certificate made. It generally takes not more than 1 month. And once you have the certificate in your hand, then you can claim very easily. Okay. Okay. And then when you click, like, for example, Scheduled Tribe of Karnataka, they'll be like, do you want to claim a seat under Scheduled Tribe of Karnataka? Note, you will need to produce relevant supporting document at the time of admission, not right now. तो पेज 5 पे रिजर्वेशन वाला फॉर्म पे जो भी रिजर्वेशन आप क्लेम कर रहे हो उसका प्रूफ आपको अभी नहीं सबमिट करना, बट पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले पेज पे जो भी रिजर्वेशन आप क्लेम करोगे उसका प्रूफ वो अभी मांगेंगे. इस चीज के बीच का डिफरेंस का बहुत ध्यान रखना. एंड दीज आर ऑल इंडिया कैटेगरीज, दीज आर नॉट स्टेट स्पेसिफिक कैटेगरीज. सी, EWS, they are also for some reason not asking the proof right now, but if you are OBC, SC, ST of all India category, you will have to give the proof. PWD, you have to give the proof. Below poverty line, you have to give the proof, right? But idhar aapko nahi de raha. So let's say, and by the way, there are a lot of other horizontal reservations you have to pick. Jaise NLIU Bhopal also gives some reservation to JNK residents. Again, relevant supporting document at the time of admission. Okay. Domicile of JNK. Just running through all of these. Wards of Kashmiri migrants, students of JNK, JNK residents, residents from Northeast India, the 7 states, if you are a resident. Sports quota, GNLU also has a sports quota. Okay? One of my students also was able to apply this year. ठीक है. स्पोर्ट्स कोटा का नोटिफिकेशन आप JNLU के एडमिशंस पेज पे जाकर स्पोर्ट्स सर्च कीजिएगा, आपको स्पोर्ट्स कोटा का मिल जाएगा. जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. देखो, मैं सीधे JNLU के एडमिशंस पेज पे गया. ठीक है, मैंने कंट्रोल F में क्या डाला, स्पोर्ट. देखो, दिस इज द स्पोर्ट्स कोटा नोटिफिकेशन. ठीक है, 2 girls 2 boys. ओके. एंड अलग से अप्लाई करना होता है. ये इन स्पोर्ट्स को कंसिडर करते हैं. इनका एलोकेशन ऑफ मार्क्स होता है. सो यू कैन लुक एट द क्लैट स्कोर इज 40% वेटेज स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फॉर दीज ईयर. अब ऑब्वियसली ये 2023-24, 24-25, 25-26 हो जाएगा, राइट? 30% weightage to the sports certificate and trial performance. They also conduct trials in the university. Okay, उसका 30% weightage होता है. And then merit list is released, according to which they take admission. So this is the merit list for this year. See, these people, cricket, basketball, badminton, tennis, they got through sports quota, and this is the merit list. CLAT score देख लीजिए, आपको समझ में आएगा. ये काफ़ी beneficial है. Okay, a lot of people clear through that as well. So if you are a national or a state level player, you have won anything, you can opt for GNLU sports quota as well. And again, domicile of Gujarat, ये सब जगह आप domicile search कीजिएगा तो आपको respective obviously reservations मिलेंगे. Sons, daughters of defense personnel deployed in UP, defense personnel of UP either retired or killed, disabled in action, wards of Kashmiri migrants, Kashmiri Pandits, Kashmiri Hindu families. अब मुझे इसके बारे में अगर डिटेल जानना है, again, I'll click on this icon, I'll go to seat allocation and I can find about these things. ठीक है, जजमेंट का नाम दिया है, SAP का गाइड क्राइटेरिया के लिए हर तरीके का इनटेक एंड रिजर्वेशन के बारे में यहाँ डिटेल दिया हुआ है. ओके, एंड एवरी टाइम ब्रोशर के लास्ट पेज पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर उस कॉलेज का मिल जाएगा इफ़ यू वांट सम क्लैरिफिकेशंस. So please feel free to ring them up and ask. Okay. So for example, let me go to the Uttar Pradesh domicile. If I select yes, again the same thing. अभी मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करना नहीं है, मैं yes क्लिक करूंगा.
एक और यहाँ पर यूपी के फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट्स की एक और कैटेगरी खुल जाती है. ओके. अदर एलिजिबल रिजर्वेशन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी, एससी ऑफ यूपी, एसटी ऑफ यूपी, ओबीसी ऑफ यूपी. यू कैन क्लिक एट एनी वन ऑफ इट. बट अभी तुम्हें नहीं सर्टिफिकेट जमा करना. ये एडमिशन के टाइम पे यू विल हैव टू प्रेजेंट. इफ यू डोंट प्रेजेंट इट, योर एडमिशन फ्रॉम आरएमएल विल बी कैंसल्ड. यू विल नॉट इवन गेट अ जनरल कैटेगरी सीट बिकॉज आपने जो सीट क्लेम करनी थी आप ईडब्ल्यूएस पे क्लेम कर रहे थे. तो प्लीज मेक श्योर वंस योर सर्टिफिकेट्स आर डन, then only you fill the form. Okay. So look at all these again. Ancestral resident of village Sidhuwal, district Patiala. ये क्या है? Sidhuwal village में RGNUL has been established. Obviously the land has been donated by the government Sidhuwal, right? तो सिद्धूवाल के जो residents हैं उनके ancestors हैं उनको reservation मिलता है वहाँ पर. Okay. And according to जैसे केरला में yes किया मैंने फिर से. Okay. यहाँ पर काफ़ी स्टेट स्पेसिफिक बहुत अलग अलग कैटेगरीज होती है. जस्ट गो थ्रू देम वेरी क्विकली इफ यू आर अ डोमिसाइल ऑफ दीज states, right? Just look at this, and accordingly fill your forms. Okay. Now I'll just look at the questions and chat box for any clarifications and any doubts people are asking. Yeah, dropper students also have to make new account. Manastuti, आपको मेक रजिस्टर करना पड़ेगा. न्यू अकाउंट आपको लेना पड़ेगा. आई ऑल्सो सी अदर मैसेजेस. रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर उत्तर प्रदेश स्टूडेंट्स अभी जस्ट हमने गो थ्रू किया. अगर तुम्हारे पास कोई और भी क्राइटेरिया कोई और भी क्वेश्चंस है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस एंड स्टेट ईडब्ल्यूएस डिफरेंट होते हैं, यस. बट अगर तुमने ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो तुम्हें स्टेट ईडब्ल्यूएस भी क्लेम कर सकते हो. तुम अपने स्टेट का. सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट टेल यू. इफ यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तुमने अपना ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो तुम आरएमएल के स्टेट ईडब्ल्यूएस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो. आई होप दैट क्लैरिफाइज इट. If you are an all India EWS and you have a UP domicile, it automatically translates to your state EWS as well. Okay. How much leverage for EWS? Beta, 10% weightage is there. 10% seats are reservation पुष्कत. तो आप 10% रिजर्वेशन वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस में क्लेम कर सकते हो. ओके. थैंक यू गौतम. थैंक यू. सो एक और चीज मैं आपको बता दूं. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सुपर न्यूमररी सीट. सुपर न्यूमररी सीट. मैं कट ऑफ बता रहा हूँ पुष्कत, आप मुझे एक बार रिमाइंड करा देना. एक बार मैं सुपर न्यूमररी सीट का डिस्कशन कर लूँ. आई विल टॉक अबाउट द कट ऑफ एज वेल. आप कट ऑफ कहाँ से चेक कर सकते हो मैं वो भी बता दूंगा. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. सुपर न्यूमररी सीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर सीट्स जो तुम क्लैट की काउंसलिंग से नहीं क्लेम कर सकते. तुम्हें एनएलयूज की वेबसाइट पे जाकर क्लेम करना होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्पेशली जैसे आरजीएनयूएल है, अगर तुम देखोगे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. आरजीएनयूएल में अगर तुम देखोगे तुम्हें ईडब्ल्यूएस नॉर्मली नहीं दिखेगा. तुम्हें दिखेगा सिद्धूवाल वाला रिजर्वेशन, कश्मीरी माइग्रेंट्स, जेएनके, ये आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस है. अगर तुम इसको यस क्लिक करोगे, आर यू रेसिडेंट ऑफ पंजाब, यस क्लिक करोगे तो आपका पंजाब का नॉर्मल डोमिसाइल लग जाएगा. और बस तुम्हारे पास एक ऑप्शन आता है विच इज बैकवर्ड कैटेगरी ऑफ पंजाब. इज नो ईडब्ल्यूएस. बट if you click at this magic button, this button, you'll get to know something very very crucial, that there actually is EWS, but it's a supernumerary quota. Supernumerary quota seats are actually allotted outside the CLAT counseling process. तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें आरजीएनयूएल की वेबसाइट टाइम बाय टाइम चेक करते रहनी पड़ेगी. ईडब्ल्यूएस की वो सेपरेट एप्लीकेशन निकालते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ वो एप्लीकेशन. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड गाइस. लेट मी शो यू. ये सब चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा मद्देनजर रखना. जब आपका फ्लैट हो जाएगा, आप जब सीट्स के लिए भागा दौड़ी कर रहे होगे, काफ़ी वेबसाइट्स पे भाग रहे होगे, इस चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ कुछ सुपर न्यूमररी सीट्स वेबसाइट पे अलग से निकलती हैं. ओके. 6 मंथ्स, अच्छा काफ़ी पीछे चलेगा, सॉरी. 2 months ago.
see this. दिख रहा है एडमिशन अपडेट, सेकंड अपडेटेड लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस, कश्मीर माइग्रेंट्स, जेएनके रेजिडेंट्स, फॉरेन नेशनल, एनआरआई। तो ये अलग से हो रहा है. आई थिंक दिस इज पेज नंबर, आई डोंट नो, दे हैव नॉट फॉर्मेटेड इट क्वाइट वेल. आई थिंक 4 पे आएगा. सी, expression of interest for JNK, Kashmiri migrants, EWS, FN and NRI. About 3 months, 27th May 2025 को ये नोटिफिकेशन आया था. इस पर क्लिक करूंगा, क्लैट एडमिशन का पूरा ये खुल जाएगा. इस पर मैं जाऊंगा पीछे तक, मैं देखूंगा ये वो डेट कहाँ थी. आई थिंक दैट वाज मे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सी द मेन नोटिफिकेशन. दिस इज, look at the notification, they have released it. EWS 18, JNK 2, Kashmiri migrants 9, foreign national 5, NRI 5. And this is the application link. Obviously it will be closed by now, obviously abhi close ho chuka hoga, but people are not aware of this. और लोग EWS की सीट्स पे एप्लीकेशन नहीं कर पाते. उनको पता ही नहीं होता कि पटियाला में EWS सीट्स की बाहर से एप्लीकेशन आती है. इस चीज़ का ध्यान रखना. सुपर न्यूमररी सीट्स चेक करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं आपको अपने कॉलेज में जोधपुर का, आपको अपने एल्मा मैटर का आपको एक बार दिखाता हूँ सीट एलोकेशन. यहाँ भी सुपर न्यूमररी सीट्स हैं थोड़ी बहुत, देख लो. लुक, EWS सुपर न्यूमररी 16 सीट्स. ठीक है, 16 seats supernumerary seats for EWS category, 16 seats for NRI sponsorship category. एंड देन आपका बाकी का जो सीट है जो सुपर न्यूमररी नहीं होता, जो 164 सीट्स है, ये आपके क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस से फिल होगी. 16 + 16 जो है ये 32 जो है आपकी फिल होंगी बाहर से. NLU जोधपुर की वेबसाइट पे आप जाओगे और आपको वहां पर एप्लीकेशन मिलेगा. You'll find the link to apply for these seats. That is what a supernumerary seat is. Please इस चीज की नजर रखिएगा. ये वेकेंट लिस्ट का नोटिफिकेशन आया है. आई थिंक there's some vacancy in Jodhpur. All India OBC NCL, All India SC. I think I should inform people about this as well. Okay, I'll keep it open and inform people about this. So I hope domicile, हॉरिजॉन्टल, सुपरन्यूमरी सीट्स का कैटेगरी का थोड़ा आइडिया अब लग गया होगा. If there are any other questions, please feel free to ask. Once you submit this, please make sure you tick here, but please make sure you do not consent here. I do hereby do not consent that my details may be shared by any third party for admissions to non-member universities. अगर तुम ये पिक कर दोगे, अगर तुम गलती से कंसेंट कर दोगे, तुम्हारी जो डेटा है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ शेयर हो जाती है. द रैंडम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यू डोंट वांट टू गो टू, एंड दे विल स्पैम यू विद कॉल्स एंड ईमेल्स एंड ब्रोशर्स. सो आई विल सजेस्ट इस पर डू नॉट कंसेंट मार्क करना. फॉर्म सबमिट करोगे, जब फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिटेड बट पेमेंट पेंडिंग करके ये हो जाएगा येलो. एंड देन यहाँ पर पेमेंट का बटन आएगा. You pay the fee and then this will become green, application submitted and fee paid. ऐसा करके आपका फॉर्म आएगा. So I'll quickly show you that. Consortium of NLUs. So yeah, CLAT 2026 पे मैं गया, मैंने लॉग इन किया. This is what you get. Application submitted and paid. ठीक है, this is what you get. You can keep editing the application form. जब आप फिल कर दोगे, आप प्रिंट एप्लीकेशन करके आप अपनी फॉर्म के डिटेल्स को चेक कर सकते हो कि कोई गलत है कि कुछ सही है. आपका जो भी है यहाँ डोमिसाइल, जो भी रिजर्वेशन आपने क्लेम किया है वहाँ यहाँ पर बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएगा. इसको प्रिंट करा लो, ठीक है, और अपने कंसर्न्ड जो भी मेंटोर्स हैं आप उनसे दिखा लो कि सब सही है कि नहीं है. ठीक है, एंड दैट इज इट. यू आर फ्री टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म till 31st October 2025, and obviously 7 December is the exam, so the portal is active now. You can start filling your forms, but please make sure if you're claiming any domicile, any category, anything, keep your proof handy and then complete your application form. You have the time till 31st October. You can keep editing it, but एक बार फॉर्म फिल करके देख लो प्रोसेस है क्या.
ठीक है. The form cost obviously is 4,018 rupees, considering for transaction charges and other things obviously are there. Fill the form, uh, and I hope the preparation is going on point. Anything you need, please feel free to message on the Telegram channel. I have commented the Telegram channel all of obviously my on my description of the video, and that will be it from my side. If you have any other questions. Yeah, cut off. Thank you for the reminder. Cut off देखो कहाँ से check कर सकते हो. So let me just quickly log out and see. This is the homepage of Consortium of NLUs, right? And you can click at CLAT 2025 and you can quickly go to थर्ड प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट यूजी, एंड जिस कॉलेज की आपको कट ऑफ देखनी है आप उस कॉलेज की कट ऑफ देख लो. फॉर एग्जांपल पुष्कत EWS UP कट ऑफ RMLU जानना चाहता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, RMLU का खोलोगे और देखो ये लास्ट है EWS UP 2180, बट दैट्स अ वुमेन कैंडिडेट. लेट मी जस्ट गो थ्रू द इंटायर लिस्ट. EWS UP में लास्ट देखूंगा कौन था एंटर करने वाला. अभी यहाँ OBC UP स्टार्ट हो गया. 2088 EWS UP इज मोस्ट लाइकली अ मेल कैंडिडेट. So that's the cutoff of EWS UP in last year CLAT 2025. So you can check like this. ये जो abbreviations है, अगर नहीं समझ आ रहा, इस लिस्ट के बॉटम पे there is a legend आपको दिख जाएगा. जैसे CDP UP देखो, ठीक है, तो ये देख सकते हो आप. हाय अंजनय, स्पॉन्सरशिप अभी नहीं करना, स्पॉन्सरशिप फॉर्म में है ही नहीं, इस बार हटा दिया उन्होंने. So you will directly use your all India CLAT rank, which you will get, and then you will apply to the respective NLUs with your rank, if needed be, right? Domicile मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल गौतम डोमिसाइल का. Let me take you to the dream university, right? So yeah, that's NLS for you. This is all India cutoff for NLS 112. Okay, I don't think ऊपर कोई है. 112 is the all India cutoff for NLS. Domicile general Karnataka students, just look at the cutoff. This is a Karnataka student, 437. So that's obviously a huge jump. And last is 460. So 112 was all India no domicile, and domicile is 460. This difference increases as you go down in colleges. For example, let me show you Bhopal. So this is C. General category MP woman candidate. Woman and MP domicile, but general 1202. But you look at a normal general rank 485. So it's a pretty significant difference. I will suggest if you can claim a domicile of a state where you have a general domicile reservation, please claim it. यूपी में all in state general domicile reservation नहीं है. यूपी में it has to be coupled with EWS UP or OBC UP or something like that. Okay. Anything else, guys? I think I've gone through all. Sure. I don't know who Kabutar is, but thank you. नहीं, बिल्ली वाली DP नहीं. Hi Priyanshi, yeah, hi. It's been a long time. हाँ, RG annual वाली domicile आप please use कर लो. Okay. Anything else, guys? Any other doubts I can take? I think I've covered most of it. Anyway, if you have any other issues, please feel free to ask. That will be all from my side. Thank you for attending the session. I hope ये सारे doubts clear हो चुके हैं. And just जनरल डोमिसाइल रिजर्वेशन नहीं है भाविका. जनरल डोमिसाइल अगर EWS है तो यूपी EWS होता है. ब्रोशर एक बार देख लो. मार्क्स डिफरेंस, इफ आई हैव टू टेक अ गैमेट, आई विल सजेस्ट 4 से 5 नंबर का तो डिफरेंस बेटा आ जाता है. there's almost 4 to 5 marks का difference between general and EWS easily. Okay, and that gulfs keeps on increasing, okay, as you go to the lower NLUs. Okay, so that will be it from my side, guys. I hope this session was helpful. Just be careful with your form filling, and best of luck for your preparation. Thank you for attending.